please click on the subscribe button and press the bell icon. Okay, let us start the session. Rahu, last 6 houses. वो है हमारे पास content. We need to cover it. Let me directly jump to the slide. Rahu in 7th house. Good for business and finance. Implementation of new plans. Okay. Support from government. Increased daily income. Good year for business setup. Okay. Success in litigation. If it is good, yes. If bad, dispute in monetary transactions, family dispute, challenge in married life, health issues to partner, unnecessary travel. Remedies, throw 7 coconuts in the river. If Venus is in Lagna and Rahu is in 7th house, problem related to partner losses. If it is in birth chart, 2 marriages, divorce, and miscarriages. This is the yoga for Rahu 7th house. Rahu 8th house. Good for luxurious life if it is good. Parental property for sure if it is good. Courageous if bad, alone. No support. Stomach related issues. Changes in career multiple times. Have everything but looks like nothing. An accident. Mars in 1st or 8th house. Rahu will give good result. Saturn 6th house. Rahu will give good result but serious issues related to health. That means Saturn 6, Rahu 8, health related challenges, serious issues. Now, Saturn 2nd or 3rd, bad for paternal uncle, water leakage, one should avoid it. Good for Saturn related career, sudden gains, foreign travel, spiritual travel. If bad, insult, child related issues, issues related to siblings, miscarriages, bad for grandfather and in-laws. दोनों के लिए खराब है. गोल्ड चेन पहननी चाहिए, डॉग घर में रखें. टेंशन विद सिबलिंग्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. ये राहु 9th क्या निशानी है, ये रहता ही है. 10th house. Okay, so good for name and fame. Rahu 10th house is not very bad. If Saturn is good, it will give you good results. Huh? Good for politics, social services, new plans, success in career, spiritual travel, success in wealth, responsibilities, growth in career. अगर खराब हुआ, family issues जरूर देगा. Problem with friends and relatives, litigation, losses, court cases, problems with partner. ये जरूर देगा. White cap पहननी चाहिए. हेयर कलर नहीं करना चाहिए. करना हो तो ब्लैक नहीं करना चाहिए. अवॉइड ब्लैक एंड ब्लू कलर ऑन द हेड. मार्स भी खराब होगा तो राहु बहुत खराब रिजल्ट देगा. इफ मून इज इन 4th हाउस, आईज रिलेटेड इश्यूज. छोटे सिक्के घर में रखे होते हैं जिनके बर्थ चार्ट में होता है, वो चलते नहीं है. राहु इन 10th हाउस. एक बात समझ लीजिए, जिसका मंगल खराब है वो बहुत दुखी रहता है. मंगल को ठीक रखना चाहिए, बिकॉज बैड मार्स इज अ गरीबी का योग, पॉवर्टी योगा. एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, Rahu 5th, Moon 11th. 5th house planet will always help 11th house planet. Ketu 8th, Ketu 4th is a cut surgery. Because in 6th house there is no Mars energy. Whenever there is a cut, blood comes out. So there is no connection of Mars. So there is no connection of blood. So that means laser. Understood? Rahu 11th house. Good for success, good for travel, gains from foreigners, foreign travel. खराब होगा तो bad relationship with friends and relatives. Bad for sleep, bad for married life, health issues to father, loss in income, ups and downs in career, loans, repayment of loans is also tough. 4 किलो लेट, 4 बजे नारियल बहते पानी में. सोने की चेन पहनना चाहिए. मोबाइल का स्क्रीन टूटा हुआ हो, घर में टूटा हुआ कांच नहीं रखना चाहिए. अगर किसी के बर्थ चार्ट में, if someone has Rahu in 11th house in birth chart, 8 साल की उम्र से पहले दादा एक्सपायर हो जाते, ग्रैंडफादर एक्सपायर्स. अगर दोनों एक ही घर में रहेंगे तो. राहु 12th हाउस और राहु, and then we have only Ketu left. Rahu in 12th house.
good for relationship with friends and relatives, good year for investment and repayment of loans, good for foreign income and in-laws, spiritual. लेकिन नॉर्मली राहु 12th में सबसे खराब होता है, ये बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का. It is very difficult to have good result from Rahu 12th. Very difficult, huh? Bad news, tension, sleep disorder, loans, disputes, fight, loss of property, vehicle and income, loss of lottery, share market. सब नुकसान. पैनल सीट्स रेड क्लोथ में लपेट के तकिए के नीचे रख लीजिए, राहु शांत हो जाएगा. नाइट स्लीप डिस्टर्ब रहती है. ब्लू बेड शीट ये लोग जरूर रखते हैं, अवॉइड करना चाहिए. ब्लू फुटवेयर ये लोग जरूर रखते हैं, अवॉइड करना चाहिए. राहु 12 जब आता है, रुको सब सुन लो, जिसके बर्थ चार्ट में राहु 12 होगा, उसके दादा ने उसके फादर को डिसोन कर दिया, कोई केयर नहीं करते. उसके ग्रैंडफादर उसके फादर की कोई परवाह नहीं करते, डिसोन कर देते. जस्ट लाइक डिसोन. बर्बरिक वाज वेरी वेरी पावरफुल योद्धा, वेरी पावरफुल. वो अकेला ही पूरी दोनों सेनाओं को खत्म कर देता, अकेला अकेला. ही वाज दैट मच पावरफुल, अलोन.